So, starting with the chapter of communicable disease in one shot, first disease we are going to cover is malaria. So, malaria का अगर एजेंट की बात करें तो दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो वेक्टर होता है, बट कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम स्पीशीज लाइक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, फैल्सीपेरम मलेरियाई। ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है और इसके जो मेजरली 198 मिलियन केसेस हैं वो फाउंड हुए थे इन 2013। मोर्टैलिटी रेट्स जो है फॉल हुआ है 47% ग्लोबली सिंस 2000। मोर्टैलिटी रेट यू ऑल नो व्हाट इज। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो द स्पीशीज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इज 8 to 17 days, प्लाज्मोडियम ओवेल इज 16 to 18 days and falciparum malariae is 18 to 48 days. ओके, नेक्स्ट होस्ट की बात करें तो ऑल एजेस आर दी होस्ट, मेल्स आर मोर प्रोन देन फीमेल्स, प्रेगनेंसी, पुअर हाउसिंग कंडीशन। इन्वायरमेंटल में सीजनली जुलाई टू नवंबर के सीजन में मोस्टली इट अकर्स, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल इंक्रीजेज द ब्रीडिंग ऑफ दिस मॉस्किटो। सो इस सीजन में भी द इंसिडेंस रेट और whatever cases increases. Mode of transmission is vector or direct transmission through needle stick injury. Congenital is very rare. Next, clinical manifestations are fever of 39 degrees Celsius to 41 degrees Celsius with chills and rigor, headache, nausea, vomiting, tachycardia and sweating. Stages are cold stage that is of 15 minutes to 1 hour, hot stage 2 to 6 hour, sweating stage 2 to 4 hours. Diagnostic evaluation is microscopy of stained thick and thin blood smear. Treatment, you all know, chloroquine and primaquine is used. For prevention and control, you can know what you have to do, that mosquito nets लगाने हैं and spray करवाना है जो भी होता है इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, और फुल स्लीव्स क्लोथ पहनने हैं, वाटर स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए ताकि ब्रीडिंग ना हो मॉस्किटोज़ की, और बाकी अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट लेना है प्रॉम्प्ट, फॉलो अप, रेफरल, ये सब करना है। दैट इज़ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट डिजीज़ वी हैव लिम्फेटिक फाइलारियासिस। इसका कॉजेटिव एजेंट है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रोगिया मलाई या टिमोरी। देन एजेंट, और ये अगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल ड्रॉ करें, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। सो एजेंट में पैरासाइट फाइलेरियर वॉर्म है, रिजर्वॉयर इज ह्यूमन एंड वेक्टर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। टॉकिंग अबाउट द होस्ट, ओवर क्राउडेड अगर एरिया है, अनसैनिटरी कंडीशन है, डिक्रीज इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन, पुअर हाइजीन। इन्वायरमेंटल में अगर स्टैगनेंट डर्टी वाटर है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, सो इट कैन अकर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 months to several years. Signs symptoms that show are fever with chills, swellings, pain in lymph node, that is the acute sign symptom. For the chronic, we have elephantiasis, thickening and swelling of limbs or genitals. Then second is hydrocele, lymphatic obstruction. Diagnostic evaluation में we do night blood smear, antigen detection test. Treatment में we give diethyl carbamazine, deck albendazole, antibiotic and surgery. For prevention and control, again the same कि मॉस्किटो से जो प्रिवेंशन के स्ट्रैटेजीज़ हैं, यू हैव टू फॉलो, वाटर को जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना है, एंड ऑल दीज थिंग आर कॉमन इन ऑल वेक्टर बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट इज काला आजार, ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमैनियासिस। इसका कॉजेटिव एजेंट है लेशमानिया डोनोवानी, वेक्टर है फीमेल सैंड फ्लाई और फ्लियोबोटोमस अर्जेंटिपीस। होस्ट आर ऑल एजेस पर्सन, malnourished people, decreased immunity or decreased socio-economic group. Environmental, mud house with cracks, damp soil, cattle shed अगर है नियर हाउस। मेजर जो लोड है वो किस किस स्टेट में है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय द बाइट ऑफ फीमेल sand fly and incubation period is 2 to 8 months. Sign symptoms are irregular fever, weakness, weight loss, loss of appetite. Late sign symptoms are paleness, anemia, darkening of skin, massive enlargement of spleen and liver. Diagnostic evaluation is RK39 rapid diagnostic test. Treatment में we give miltefosine, amphotericin and paromomycin. These are the drugs that are used in this Kala Azar. And for again the prevention and all, we have the same because here vector is also a mosquito. Next disease we have Japanese encephalitis, that is a viral zoonotic disease. इसका एजेंट है Japanese encephalitis virus from the family Flaviviridae. वेक्टर इसका अगेन क्यूलेक्स मॉस्किटो है। और किस चीज़ का वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन वी हैव होस्ट, दैट इज मेनली बिलो 15 years of child.
Human are the dead end host and pigs are the amplifying host. Incubation period is 5 to 15 days. Environment में है rice field, stagnant water, monsoon, warm and humid climate. Clinical manifestations are sudden high fever, headache, nausea, vomiting, convulsions, neck rigidity, coma, altered sensorium. Diagnostic evaluation में we do IgM antibody detection, ELISA test. Treatment is no specific treatment of JE. And for the prevention and control, you know all the points that is related to mosquito control measures you have to write. For the vaccination, we have first dose at 9 month and second dose at 16 to 24 month. Next we have dengue fever. इसका causative agent है dengue virus. Vector is Aedes aegypti mosquito again. Host are all ages, children basically, non-immune persons, urban population. Environment is urbanization, overcrowding, stagnant clear water. Then we have warm and humid climate, poor water storage. Okay, next is incubation period 4 to 10 days. Clinical manifestations is sudden high fever, severe headache, muscle, joint pain, rashes. Then for the next complication, that is diagnostic hemorrhagic fever, is also a type of dengue fever, and dengue shock syndrome is also type. So in some clinical manifestations are bleeding, shock, plasma leakage and thrombocytopenia. Diagnostic evaluation are NS1 antigen test, IgM, ELISA and CBC. Next we have chikungunya caused by chikungunya virus. Vector are Aedes aegypti and Aedes albopictus. Host are all human, are the reservoir. Environment is warm, climate that I have told. Then that again clean stagnant water, poor storage conditions, urbanizations. These are incubation is 3 to 7 days. Clinical manifestations are high grade fever, severe joint pain, arthritis like pain. Then headache, redness in eye, rashes. These are diagnostic evaluation IgM, ELISA, RT-PCR and CBC. And for prevention and control you have to write all those same similar points. So that's it for this video. We have covered all the communicable disease according to the syllabus. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe. Bye.